नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हेलो एवरीवन। तो आज वो घड़ी है जिस घड़ी का आप सबको बेहद इंतजार है, यानी कि क्या? यस, B.Tech इंजीनियरिंग फिजिक्स सेमेस्टर 2 फाइनल एग्जामिनेशंस, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। और आप सबकी डिमांड पे आपने बहुत सारी कमेंट की है हमारी चैनल पे कि सर एक वीडियो इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 एंड सेम एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो। तो आज हमने टाइटल दिया है 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन। यानी क्या? यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, यू नो 360 डिग्री दैट मीन्स व्हाट? कंप्लीट सर्कल। अगर कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री हो जाता है तो उसमें से कुछ छूटता नहीं है। तो वैसी ही आज की हमारी प्रिपरेशन है फॉर व्हाट? यस, B.Tech इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्मार्टली मूव करना है, हार्डली नहीं, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम। बस कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो हमें इन दिनों में कितनी चीजें पढ़नी है कि जिससे हमारा पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो उसके पहले हमें पेपर स्टाइल पता होना चाहिए। व्हाट इज अवर एग्जाम पेपर फॉर्मेट? हाउ मेनी क्वेश्चंस अराइजेस इन अ different category? Like, is there MCQ in a paper or not? Filling the blanks or not? Or 2 marks question, 5 marks question, 6 marks question is there? Then how many questions? और उसके हिसाब से हमें अपना इम्पोर्टेंट पता लगाना है और उसके हिसाब से हमें हमारी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल go through the exam paper format. This is our exam paper format. Everyone know there are two sections, section A and section B. So first of all, there is no MCQ in your exam paper. There is no fill in the blanks in the exam paper. यानी कि क्या, जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं तब आपको MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन की तैयारी ही नहीं करनी, because there is no MCQ, there is no filling the blanks. So you can ignore it, ignore MCQ, ignore the one liner question preparation, because in our question paper format there is no MCQ. But do not ignore the short questions. You can see in our exam paper format the category of 6 marks, 4 marks or 5 marks. There is no 2 marks, there is no 3 marks. But the point is what? The point is, let's check section A, question number 1. In the question number 1 there are two questions, A and B. A has a 6 marks, B has a 6 marks. But question A has a 3 different questions. Question number 1, question number 2, question number 3. And each question has a 2 marks. Each question has a 2 marks. So 2 plus 2 plus 2, 6. So 2 marks question is a part of our paper. So you can't ignore it. उसको हमें इग्नोर नहीं करना है बेटा। तो हमारी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी? शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 marks question. Similarly, in question number B, 1, 2, 3, there are 3 questions in 2 marks. 2 plus 2 plus 2, total 6 marks get it. Now come to the question number 2. In the question number 2 there are 2 questions, A and B. A has a 4 marks and B has a 2 question, question number 1 and question number 2. But here we have option or. That means you can write this or this, not both. You can answer this or this. आपको आंसर इसका लिखना है या इसका लिखना है, बाकी एक ऑप्शन में। तो ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है? 5 मार्क्स कैटेगरी में मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन हो गया आपका 5 मार्क्स का। Similarly, in the question number 3, question number A is a compulsory 4 marks, and again in question number B there are 2 options. Either you can answer this or this, 5 marks. And the same pattern in question number B, section B. Again question number A, question number 1, question number 2, question number 3. Both section has the same pattern. So let's identify how many question in our question paper and category of marks. So let's see.
Question number 1 in section A. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 question in 2 marks. Again from section B 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कि total 12 questions in 2 marks category. Clear? Now come to the 4 marks category. One is a compulsory, 1, 2, 3 and 4. So there are 4 questions. There are 4 questions in 4 marks category. Clear? And how many question in 5 marks? See, there are 2 question, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. But one in option. So 1, 2, 3, 4. Only 4 questions in 5 marks category. But here plus 4 extra. Plus 4 extra. Am I clear? क्या आप समझ पाए कि कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स की कैटेगरी में है? टोटल हमारे एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं. There are 12 question in 2 marks category. There are 4 question in 4 marks category, and there are again 4 question in 5 marks category. But there are 4 extra questions in question number 2 B segment, question number 3 B segment, and similarly in section B. So हमें इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बेनिफिट लेना है. क्यों मैंने ये पेपर स्टाइल समझाया? ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा दे सको. अब हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, अब हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ सके, इंपॉर्टेंट हो. तो इसका उपयोग हमें करना है 4 एक्स्ट्रा का. जो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स है, वो हमें इग्नोर करना है. किसको पढ़ना है और किसको इग्नोर करना है, चलिए समझते हैं वन बाय वन. तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और ये है हमारा टारगेट. दिस इज अवर टारगेट. नाउ व्हाट इज अवर हथियार? हमारी बंदूकें कहाँ हैं? यस, वी हैव 5 guns, that means 5 unit. Laser and optics fiber, first unit. Modern physics, band theory and semiconductor devices and materials. So first, second, third, fifth, fourth. अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमें 3 यूनिट पे थोड़ा ज्यादा भार देना है. आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो विश्वास करके देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में मिले. तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट बताना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल डिस्कस 5 marks question category, then I will discuss 4 marks question category, and then I will show the 2 marks question on my computer screen. How many questions are very important in 2 marks category and how to answer it, we will discuss at the end of this video. All of you clear? आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, I will answer it. यहां तक सारी बातें क्लियर है बेटा? ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेपर इज जनरेटेड बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड द मेन पॉइंट इज व्हाट? द मेन पॉइंट इज AI इज ड्रिवन बाय ह्यूमन. यस, तो हम क्या करेंगे? इंपोर्टेंट निकालेंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज ऑलवेज सेम but maybe in a different language, and this is my first point in this video. Like from the first unit, first of all there are 3 main units. First is laser and optics fiber, second is modern physics, and third is band theory of solid. So your 70% portion from this unit and rest of the 30 portion from this. Clear? Now come to the first point. Let's suppose my very important question from this unit is ruby laser or helium neon laser. And similarly in the laser category there is another important question. Define the Einstein coefficient or derive the Einstein coefficient. But ignore it. How openly? How I can say you can ignore the derive the Einstein coefficient of relationship? Come here. See, 1, 2.
देयर आर वन ऑप्शन, एक उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो हम क्यों उस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख के याद रख के जाए, क्योंकि हमें दूसरा ऑप्शन मिलने ही वाला है और दूसरा ऑप्शन हम वैसा सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। समझ गए आप लोग? सो दिस इज माय फर्स्ट हिंट कि जब भी हम 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे पॉइंट्स को छोड़ दे जिसमें हमारे मार्क्स नहीं बन रहे हैं या जो हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो मैंने एक हिंट यहाँ पर दे दी कि भाई जो भी आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप है, अगर आपको इक्वेशंस नहीं आते, आपको आता है तो बहुत बात ठीक है, नहीं आता तो यू कैन इग्नोर इट। सो द मेन पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन इज दिस ruby laser, helium neon laser. Okay, and now let's see the question arises like this. Question number 1, beta answer is always same. You know ruby laser answer is what? It's diagram, it's working, it's applications, or it's energy level diagram. This is the answer. But the question may be like this कि रूबी लेजर पूछा है तो ऐसा भी पूछते हैं डिफाइन सॉलिड स्टेट लेजर, बट वी नो सॉलिड स्टेट लेजर दैट मीन्स रूबी लेजर, वो रूबी लेजर ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा पूछ रहे हैं तो रूबी लेजर के बारे में पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में अगर पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि भाई डिफाइन द 3 लेवल सिस्टम ऑफ लेजर, तो आपको पता है कि भाई 3 लेवल जो सिस्टम है वो कौन सा लेजर है? रूबी लेजर। तो एट द एंड आंसर तो वही है, रूबी लेजर। कभी कभार आपको पूछ लेगा कि भाई डिफाइन द फर्स्ट इन्वेंटेड लेजर, फर्स्ट इन्वेंटेड लेजर कौन सा है? रूबी लेजर। तो क्या होगा पेपर में, ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि पेपर में आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जब आप उसको निचोड़ देंगे ना तो उसका आंसर आपको आता ही होगा। क्योंकि जो मैंने यहाँ सेगमेंट लिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 में ये 3 पोर्शन, यूनिट नंबर 2 में ये 3 पोर्शन, यूनिट नंबर 3 में ये 3 पोर्शन, इसी में से आपको आंसर मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। यस, 100% श्योरिटी कि आपको आंसर्स इसी पोर्शन में से मिलेगा, बट मे बी द क्वेश्चन इज डिफरेंट, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस एंड देन आंसर इट। क्लियर? 2-3 तरह मैंने बता दिया, जैसे फर्स्ट इन्वेंटेड लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर, 3 लेवल सिस्टम, हीलियम नियॉन इज अ 4 लेवल सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल एंड 4 लेवल सिस्टम। सो द क्वेश्चन फ्रॉम रूबी एंड हीलियम नियॉन, उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको एनर्जी लेवल्स डायग्राम देके बता देना। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही बेटा? हाँ, तो ये एक आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको लेजर और ऑप्टिक्स फाइबर में से मिलेगा वो ये है 100% एप्लीकेशन ऑफ लेजर। आपको क्वेश्चन पेपर में तैयार करके लिखना ही है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इन दोनों एप्लीकेशंस को आपको तैयार करना। हाउ टू आंसर इट आई विल एक्सप्लेन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कि वो कैसे पूछे जा रहे हैं, वो जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो के नीचे मैंने काफी सारे विद सॉल्यूशंस आंसर दिए हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाके आप आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू राइट इन द एग्जाम पेपर, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा, एक मैंने यहां पर लिखा है ऑप्टिकल फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के। सिमिलरली आई हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ लेजर, बट एक को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेजर में इतना सारा है पूछने के लिए, तो वो स्ट्रक्चर को शायद छोड़ देगा। मैंने बोला ना कि अब हमें हार्डली नहीं जाना, अब हमें स्मार्टली जाना है, तो यू कैन इग्नोर इट बट प्रिपेयर दिस। अब मैंने लिख दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, आपने रट लिया कि हाँ एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन कोर, क्लैडिंग एंड बफर जैकेट। फिर आप पूछेंगे कि सर आया तो नहीं, नहीं बेटा, क्वेश्चन तो आया था, उसने पूछा था अलग तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोर, क्लैडिंग एंड बफर जैकेट, तो आपको लिखना है। कहीं ऐसा हो कि वो 2-2 मार्क्स की कैटेगरी में आ जाए, यहां पर डिफाइन कोर, डिफाइन क्लैडिंग, डिफाइन बफर जैकेट, आ तो सकता है, हाँ के ना।
लेजर में क्या इंपॉर्टेंट है, लेजर में मेथड इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां लिख के रखा है, डिफाइन स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, एब्जॉर्प्शन। लो पूछ लिया क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा इंपोर्टेंट करके रखा है। और लास्ट जो सेगमेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर आपको आता है तो इसको तैयार कीजिएगा, वरना उसको छोड़ दीजिए। खास करके अब जो एक चीज रह गई है लेजर सेक्शन में वो है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। एक है जो Na का न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल का, और दूसरा है पावर लॉस। उसका इक्वेशन हमने दिया है पीडीएफ में, एट द एंड में आपको स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी आपको, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना है या कैसे लिखना है। चलिए ये तो सेगमेंट हो गया लेजर का। मैं फिर से बेटा बता रहा हूं, आपको ऐसा डायरेक्ट ना मिले, क्लासिफिकेशन डायरेक्ट ना मिले, उस पर लिखा होगा डिफाइन बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन, डिफाइन बेस्ड ऑन मोड्स, तो वो सारी चीजें क्लासिफिकेशन में ही आती है। बस इतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और अगर आप ये 3 यूनिट भी करके जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन मैं लास्ट यूनिट का बता दूंगा, वो 100% श्योरिटी के साथ इस 5 मार्क्स सेगमेंट में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यूनिट नंबर 2 में आते हैं। ये लेजर हो गया। यूनिट नंबर 2, देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको आपको पढ़ लेना। the black body radiation portion is little bit long, but the 2 marks question from the black body, 4 marks question from the black body radiation part, again 5 marks question from the black body portion. So this is the very important portion, इसको हमें नहीं छोड़ना है। सेकंड टेक्निक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में 2 क्वेश्चन है, एक है टाइम डिपेंडेंट और एक है टाइम इंडिपेंडेंट। आपको कोई सा भी एक तैयार तो करके ही जाना है। और आपको पता है कि भाई टाइम अगर मैंने डिपेंडेंट निकाल लिया तो फिर इंडिपेंडेंट के लिए तो 2 ही स्टेप्स, तो क्यों ना वो पूरा क्वेश्चन करके जाए। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा इन द कैटेगरी ऑफ 5 मार्क्स, तो ये हमें नहीं छोड़ना है। वो मैंने बता दिया कि भाई आप कोएफिशिएंट को इग्नोर करो, लेकिन इसको इग्नोर मत करना। और 4 मार्क्स के लिए, फॉर द 4 मार्क्स you have to read this portion, wave particle duality. Now it's done, only numerical is remaining, and there are 2 numericals are important. I will explain at the end of this video. Clear? So ये 2 chapters हो गए। अगर ये 2 यूनिट हो गए, that means 50% ऑफ पेपर हो गया, ऐसा आप मान सकते हैं है। चलिए अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बैंड थियरी इन सेमीकंडक्टर। बैंड थियरी ऑफ सेमीकंडक्टर में एक डेरिवेटिव है जो बच्चों को बहुत तंग करता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड एंड होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। मैं तो बोलता हूं बेटा इसको इग्नोर ही कर दो। लो सी द पावर, यस पावर तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप ऐसे थॉट प्रोसेस, माइक चालू है ना, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमें तो ऑप्शंस मिल ही रहा है 5 में, एक या दूसरा, एक या दूसरा, एक या दूसरा, एक या दूसरा, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बोले कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछा, यहाँ होल पूछ लिया, तो पूछ सकते हैं, वो तो अपने रिस्क पे है। लेकिन पूछने के लिए कई सारी चीजें आपको खास तैयार करना है। आप इस, अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको इसको इग्नोर करना है या आपको पढ़ना है, बिकॉज इट इज अ टू कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन। क्लियर? आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए आ जाते हैं हम 4 मार्क्स के सेगमेंट में। वहां पर आपको पढ़ना है इफेक्टिव मास का पोर्शन एंड डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप पोर्शन। You have to cover these 2 portion in 4 marks category and in the 5 marks category Fermi level in semiconductor. उसमें काफी सारी चीजें हैं। You can डिफाइन विद द इक्वेशन कि भाई फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर में कहाँ है, यहाँ है, वहां है, यहाँ है, कहाँ पर है। और विद द डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन कि भाई डायग्राम में पी टाइप में फर्मी लेवल है, एन टाइप में कहाँ है फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल कहाँ है। तो ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन इसमें से निकल पा सकते हैं, जो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर इट? आवर 3 यूनिट्स आर डन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट।
इसमें से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन निकलेंगे। 2 मार्क्स में पूछ लिया व्हाट इज फर्मी लेवल, तो मैंने आपको टॉपिक बताया है, आपको इसमें से किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है, बाकी पूरा यूनिट छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स और ये 5 मार्क्स का हो गया है। नेक्स्ट देखना है हमें डिवाइसेस। डिवाइसेस में ओनली 2 तरह के डिवाइसेस हमें बहुत ही तैयार करने हैं, एक है इमीटर कैटेगरी और डिटेक्टर कैटेगरी। इमीटर यानी एलईडी हो गया या आईआर हो गया, उसको आप बहुत ही सिंपल है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 4 मार्क्स 2 मार्क्स की कैटेगरी में भी हो सकता है, बट इन द 4 और 5 मार्क्स कैटेगरी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, फोटो डिटेक्टर्स। एंड इन द फोटो डिटेक्टर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, पी एन डायोड, पीआई एन डायोड, एवलांच डायोड और फोटोवोल्टाइक सेल, दैट मीन्स सोलर सेल। आपको बस ये एमिटर पोर्शन को कवर कर लेना, सॉरी डिटेक्टर पोर्शन को कवर कर लेना। अगर इतना हो गया तो इसमें से ही आपका 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो भी है वो बन जाएगा, बाकी सब चीजें को छोड़ देना। और नेक्स्ट थिंग मटेरियल। In the 5 marks category with the 100% surety, either 4 marks category or 6 marks category. This question is 100% in your paper, properties of nanomaterial or properties of low dimension nanomaterials, and there are the varieties type like from the nanomaterial last chapter in the 5 marks question, write the properties of nanomaterial. एक तरह। Second type, write the properties of low dimension material. Third type, write the physical, mechanical and thermal properties of nanomaterial. Fourth type, write the magnetic property, optical property and thermal properties of nanomaterial. Fifth type, in the 4 marks category, write 4 properties, physical, mechanical, thermal and optical property. In the question 1 6 marks category, that means 2 question, define the physical properties of nanomaterial, define the mechanical properties of nanomaterial, define the thermal properties of nanomaterial. 2 marks 2 marks 2 marks 6 marks, लेकिन पूरे पेपर में इसमें से क्वेश्चन होगा ही होगा। So my very important question is what? Yes, properties of nanomaterial or properties of low dimension material. Always remember there are 6 points: physical, thermal, mechanical, optical, magnetical and electrical। हो गया? फिजिकल, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक, ये 6 को आपको तैयार करके जाना। अब 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज नैनो मटेरियल, व्हाई, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। Why nano, what is the nano, what is the application, and the last question is 0D 1D 2D। मैंने आपको सिखाया था कि what is 0 dimensions, what is 1 dimension, what is 2 dimension, some of the example of 0D 1D and 2D, and the last segment is novel material। अगर आपको तैयार करना है तो कीजिएगा, वरना उसकी जिद्दोजहद ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कहीं 2 मार्क्स में रह जाए तो रह जाए, बाकी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। तो ये मैंने 5 यूनिट लिखे हैं, एंड ईच यूनिट देयर आर 3 or 4 सब टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कवर दिस सेगमेंट ना, योर 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स कैटेगरी इज डन। Now only remaining is 2 marks category or 1 or 2 questions, only 1 or 2 questions, or only you can 1 question in 4 marks category. So only some of the percentage is remaining in the category of 2 marks. कितना पोर्शन बाकी बचा, तो जस्ट 2 मार्क्स का डिस्कशन बाकी बचा, बाकी 4 और 5 मार्क्स का आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। Always remember बेटा, I noted here topics, not questions, and I already given the example how the question arises in your question paper। वो कैसा दिखेगा वो समझ में न, हर बार ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही दिखेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कई सारी चीजें, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो आपको पता होना चाहिए कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। समझ में आ, अल्ट्रा वायलेट कैटोस्ट्रॉफ है जो ब्लैक बॉडी का है पोर्शन, तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि व्हाट इज अल्ट्रा वायलेट कैटोस्ट्रॉफ, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ कि ना। उसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये पोर्शन हमें पूरा तैयार करना है, तब जाके आपका
ये पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा। एंड नाउ कम टू द माय लैपटॉप, आई विल एक्सप्लेन विथ योर पीपीटी, जो आपके पास पीपीटी है कि आपको कितना कितना एक बार रफली पढ़ लेना है फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, और बाकी सब चीजें आपको राम भरोसे छोड़ देनी। तो चलिए आ जाइए लैपटॉप पे। लोग आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आपको सबसे पहले गूगल में चले जाना है, यूट्यूब में, और यहाँ जाकर आपको फिजिक्स की दृष्टि यूट्यूब चैनल सर्च करना है। जैसे ही आप फिजिक्स की दृष्टि यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको ये होम पेज पे चले जाना है। ये है हमारा होम पेज फिजिक्स की दृष्टि यूट्यूब चैनल का। उसमें आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। जैसे ही प्लेलिस्ट में गए, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, देखो, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बेटा दिख रहा है ये प्लेलिस्ट। इसको आपको ओपन करना है और इसमें जितने भी वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 8th वीडियो देखा, ये है 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे आंसर्स लिखने हैं 2 मार्क्स में, या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ 2 यूनिट के लिए बताया है। बाकी का मैं अभी के वीडियो में कंटिन्यू बता देता हूँ। ठीक उसके ऊपर आपको लेजर मिलेगा, ठीक इसके ऊपर आपको मॉडर्न मिलेगा। अब यहाँ जो 6-6 मार्क्स में लिखे हैं वो आ सकते हैं 2-2 मार्क्स में, कट डाउन होके 3-3 पार्ट्स में, या फिर 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। That means these are the important question. Here I written 6 marks, so they will cut down in a 2-2 marks. So the whole question marks is 3. Otherwise, the category is 5 marks. Again, third unit is band theory and semiconductor. Now the fourth unit is optoelectronic devices. My fifth unit is, yes, nanomaterial, and 2 numericals. So remember, 4 numericals are important. First 2 from the laser, second 2 from the modern physics. Clear? And this is for a mid sem, so you can ignore it, otherwise you can refer it, no problem, because only 2 units are there. And now let's discuss the 2 marks questions and some remaining things. So chapter name is laser and optics fiber. अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा, हाँ, व्हाट इज लाइट जस्ट पढ़ लेना है, बाकी जाने देना है। ऑर्डिनरी लाइट जाने दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जाने दो, वेवलेंथ ऑफ कलर जाने दो। इसमें जस्ट आपको याद रखना है कि जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, 400 to 700 नैनोमीटर। दिस इज द मेन थिंग। फुल फॉर्म ऑफ लेजर, yes, light amplification by stimulated emission of radiation. You can revise it for 2 marks. This is the my first question, this one, characteristics of laser. कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कभी कभार ये 4 मार्क्स में भी मिलेगा, इफ योर लक इज सो गुड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। बाकी सबको स्किप करते जाओ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, these 3 processes. Remember, first 2 marks, second 2 marks, third 2 marks. The total marks is 6 marks. They will ask, write about stimulated absorption, spontaneous emission and stimulated emission. तो ये एक चीज हमें पढ़नी है। Next, this is the Einstein coefficient of relationship, but you can ignore it because it is in option. Okay, so skip. Skip, yeah. This is another question, condition for light amplification। कभी कभार ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, फर्स्ट कंडीशन n2 is greater than n1 and second condition is metastable state and external energy should be very large। यहीं से आपका प्रिपरेशन हो गया, अब इसको खोल के दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, multiplication of laser, population inversion, skip, metastable state. Again remember, for 2 marks, metastable state. This is the third question in 2 marks category. Next, spontaneous and stimulated emission। अगर आप वो पढ़ते हैं, मैंने बताया ना, spontaneous emission, stimulated emission and absorption, ये सिमिलर ही है, इसमें सिर्फ डिफरेंस पूछा है, बाकी कंसेप्ट इज सेम। सो आइदर दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस और इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट नोट, ऑलवेज रिमेंबर। कंपोनेंट ऑफ लेजर पहले ही है 1 2 3, एक्टिव मीडियम, पंपिंग मीडियम, गेन मीडियम। स्किप करो, लेजिंग एक्शन को स्किप करो, 3 लेवल सिस्टम 4 लेवल सिस्टम को स्किप करो। डिफरेंस 3 लेवल सिस्टम 4 लेवल सिस्टम, ये किसका है? रूबी का है, ये हीलियम नियॉन का है, ये हमें याद रखना है। दिस इज द कंसेप्ट, और कंसेप्ट इसी के रिकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट,
ये आ गया 5 मार्क्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर. हाउ टू राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम, then description, then this is the main part, energy diagram. See, first, second and third, it is 3 level system. Okay, and then working mechanism ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट और में क्या आएगा? यस, हीलियम नियॉन लेजर. ठीक है, तो ये दोनों हमें लेजर पढ़ लेने हैं. नेक्स्ट, दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चंस. सेमीकंडक्टर डायोड, skip beta. This is the main question. I already told you application of laser, must application of laser काफ़ी सारी है, जैसे कंप्यूटर्स में एप्लीकेशंस हैं, सरफेस टेक्सचरिंग, लेजर ड्रिलिंग, लेजर वेल्डिंग, लेजर कटिंग एंड मेडिकल यूजेस. अप टू दिस इट इज ओके. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल. इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, जस्ट नंबर कैन चेंज, otherwise the method is same. Now come to the fiber optics technology. What is optical fiber cable? Always remember 2 मार्क्स कभी भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ये जनरल चीज़ है. ये स्किप करो, स्किप करो, स्किप करो. यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोर, क्लैडिंग एंड आउटर शीट. नेक्स्ट, skip. Yes, TIR. What is TIR? Total internal reflection. Just use the definition. Next, skip. This is the equation, numerical aperture, and maybe the numerical questions from this equation. How? I will explain. What is numerical aperture? Remember the definition and equation. This is the 5 marks questions. Based on refractive index, there are 2 types: step index fiber, graded index fiber. इन दोनों को हमें पढ़ लेना है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ड ऑन सिंपल मोड, मल्टी मोड and graded index mode. Okay, in the 5 marks category. In this portion, just remember this equation because for MCQ. So this equation and another numerical aperture equation, both are important. How? I will explain. Remember always laser application and optical fiber applications for your knowledge. Skip. Yes, this is the first numerical from the numerical aperture, Na and phi. Remember these two equations, value can be changed. Next equation is, yes, loss alpha. It is okay for this unit. That name is what? Laser and optical fiber. You can skip rest of the things, those who are not discussed in this video. These are the 2 reference book, but right now it is not useful because this PDF is okay. Now come to the second unit versus our second unit, modern physics, or you can say quantum mechanics. Let's change the color of pen in the second unit, green. Clear? Okay, let's start our first portion. Skip the introduction. Skip. Yes, what is quantum mechanics and the importance or the foundation principle of quantum mechanics? This is important beta in 2 marks, so read it. What is quantum mechanics and principle of quantum mechanics? माइक चालू है ना? हाँ. नेक्स्ट, चलो इसको हटाओ. फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स जस्ट याद रखेंगे बे स्ट्रक्चर, ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक, और द मेन पोर्शन इज दिस, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. चलो स्ट्रक्चर को हटाओ. दिस portion is very important in this chapter, black body radiation, and there are multiple things in this chapter. Okay, so what is black body? 2 marks question. Okay, that name is Faraday's black body. Consider as a black body. Yes. Next, black body radiation, Stephen constant or Stephen Boltzmann law. 2 marks questions. Next, black body radiation, Wien's displacement law. 2 marks questions. Next, black body Wien's displacement law formula and कहाँ गया? यहाँ नहीं दिया. Rayleigh-Jeans law. Yes, this Rayleigh-Jeans law, and the second thing is this ultraviolet catastrophe. 2 marks question. So there are multiple 2 marks questions from the black body radiation.
दैट मीन्स इसी पोर्शन में से आपका 6 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन लॉ, व्हाट इज प्लैंक रेडिएशन लॉ, एंड रिमेंबर दिस इक्वेशन, E is equal to NH. Clear? So again 2 marks questions. So black body portion is a very important thing for us. Clear? Next, this is the equation of Planck radiation law. कभी कभार पूछ लेंगे to write the equation of Planck radiation law in 2 marks. Yes. So this is a very important thing, beta. Next, photoelectric effect. There are two effects. First is photoelectric effect, second is Compton effect. You can prepare any one. ओके इन दोनों में से कोई एक तो आपको मिलेगा। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, खास करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप हटा सकते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, डिस्क्राइब एंड द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड समटाइम्स वन न्यूमेरिकल मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चंस. And second effect is Compton effect. What is Compton effect? What is Compton shift? This is the very important thing. So remember black body radiation for 6 marks and two effect. First thing is what? Yes, photoelectric effect. Second is Compton effect for 4 marks. Done. Next wave particle duality. This is the portion of wave particle duality. इसको हटा दो, डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाओ. कभी कभार ये इक्वेशन आपको डिराइव करने को बोलेगा कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ. आपको देखना है तो आप देख सकते हैं. इसको हटाओ, स्किप. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 2 marks क्वेश्चन. दिस इज द फॉर्म. कहाँ गया? यस, दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन or principle of Heisenberg uncertainty principle, mathematical principle or mathematical expression. Okay, remember for 2 marks. Next, skip significance of the wave function. अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं. For 6 marks, this is the important. What is wave function? Significance of the wave function, and the next thing is कहाँ गया? यस, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन. ये 3 पार्ट मिलके टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चंस बनाएंगे. वेव फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय साइड फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चंस. डन. So this is the normalization. Before, this is the wave function. This is the wave function. This is the significance of the wave function, and this is the normalization of wave function. 2 plus 2 plus 2. Total marks is 6. Next, eigenvalue. Skip. Schrodinger wave equation. This slide. Skip. First, time dependent Schrodinger wave equation. Okay. And second question is टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. क्लियर? इन दोनों में से आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क्स की कैटेगरी में आपको पूछा जाएगा, तो वो आपको तैयार कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है वो. ये जो आ गया वो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और उसके बाद जो ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये जो आया वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. टाइम डिपेंडेंट and time independent. Rest of the things you can skip. This is a very important question, but you can skip because why? Yes, because for a option this question वो ऑप्शन में चला जाएगा, तो इसको हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, ये चला गया. Next. This is skip. Yes, quantum tunneling. You can go for 2 marks. Otherwise, you can skip this portion. No problem. Skip. Yes, these are the 2 books, and our second unit is done. Okay, so there are in this unit I told 5 to 6 2 marks questions. They are very important, and rest of the 4 marks and 5 marks questions. So all things are done. Clear? Next, so अब कौन सा यूनिट हम आए? अब हम आए हैं यूनिट नंबर 2. तो चलिए हम आ जाते हैं बैंड थियरी एंड सेमीकंडक्टर पे. बैंड थियरी एंड सेमीकंडक्टर. दिस इज अवर थर्ड chapter, band theory in semiconductor. Let's see what are the important things. First page skip, second skip. This is the 2 marks valence band,
conduction band, band gap. What is the valence band? What is the conduction band? What is the band gap? Using the diagram. Okay, so always remember these things. Next, EK diagram, only two things: EK diagram, figure, and significance. These three are the significance. It is enough, and remember this equation. Clear? Next, Croning-Penry model. These two things. Next, skip. Okay. Formation of energy bands in solid. इसको हटाओ, skip. Okay. This is the theory, beta. Skip. Okay. Now come to the main point. Effective mass. What is effective mass? 2 marks. The question may be in 4 marks. What is the effective mass and derive the equation. Okay. So this is a very important questions. Starting from this, for conduction band, this is for positive, and for valence band, this equation in the negative. So up to this, it is a 4 marks effective mass formula. This is important things. Next, direct band gap or indirect band gap. If you are fail to remember the effective mass formula, then go through this. They are in options. Write the difference between direct band gap and indirect band gap, or write a short note on direct band gap, write a short note on indirect band gap using the diagram. So this is the direct and this is the indirect, and remember three points, it is enough. Clear? Next, skip 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 skip. Okay. Sometimes they will ask in 2 marks, write the density of state for conduction band and valence band. तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं डायरेक्टली, डेरिवेशन का नहीं आएगा. नेक्स्ट, career concentration. There are two types of career concentration. First is this electron in conduction band, and the second is hole in valence band. अब आपको क्या करना है, कोई सा भी एक याद रख लेना. या तो ये आएगा इन द 5 marks कैटेगरी, or if you are suffering to remember it because there are lots of equation, but it is very easy. So my recommendation is prepare this electron in conduction band, concentration of electron in conduction band. Okay beta, because it is important. If you are suffering to remember these kind of equation, because there are lots of equation in this derivation, so you can skip this portion, no problem, because we have a one option and you can choose the theory portion, not a derivation portion. Okay, so no problem. So this is our second derivative, holes in valence band, but my recommendation is always remember this electron in conduction. Okay, this is a very important question for us. Rest of the things skip. Position in Fermi level for 2 marks, for 4 marks. How? Sometimes they are using find the position of Fermi energy level in intrinsic. 2 marks, 4 marks. 2 marks that means only figure, 4 marks that means formula plus figure. This is only one question बेटा, जो मैंने आपको बताया है, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर मटेरियल. बाकी सब तो मैंने आपको स्किप करवा दिए, तो एक तो आपको पढ़ना ही है. अब आ जाते हैं एक्सटेंसिक में, सेम क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल. तो एक्सटेंसिक में विथ इक्वेशन this and this. So this is for intrinsic, N type, P type. The question may be like this for 2 marks to show using diagram, then 2 marks. If 4 marks, equation plus diagram. Sometimes they will ask only for intrinsic, sometimes they will ask only for N type, sometimes they ask only for P type. Either 6 marks or 5 marks questions, they will ask whole question, show the Fermi level in semiconductor. So you have to write intrinsic, extrinsic, and N type and P type. Okay, so from this chapter, this is the most important question from my side. Next, PN junction, you can skip this portion. Again, second slide, skip it. Ohmic junction, just go through the one time what is ohmic, and go through the one time what is Schottky, and it is done. Clear? So our third unit is
Done. That name is band theory in semiconductor material. Next, our next unit is optoelectronics. So this is our fourth unit. कौन सा कलर ले बोलिए आप अब पेन का? ये कलर ले लेते हैं, ठीक है. This is our fourth unit, optoelectronics, and only some important topics in this. For 2 marks, it is enough. The first slide is enough for this chapter. For 2 marks, what is optoelectronic material? What is optoelectronic material? And what is the optical absorption charge carrier generation? Or what is the emission and charge carrier recombination? Bas. These two questions. Which question? Optoelectronic materials. What is optoelectronic materials? That means definition. And absorption and emission. What happened? That is the question. Now come to the 4 marks or 5th marks category. For a 4 marks category, anyone, either they are asking write a photovoltaic cell. Photovoltaic cell, that means solar cell. For 5 marks, they will ask PN, PIN, and avalanche. So question like this, junction photodiode, or to show the detector of PN, PIN, and avalanche. So these 3 or 4 type questions, but the answer is same. What? Yes, PN, PIN, and avalanche. Sometimes they will ask photovoltaic cell. फोटोवोल्टाइक सेल, दैट मीन्स सोलर सेल. सो ये आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 5th मार्क्स में भी आ सकता है. सारा आंसर इस पे दिया है. इन द 2 मार्क्स, this is first question in 2 marks, second question in 2 marks, third question in 2 marks is LED photoemitter, and last question in the 4 marks category is this optocoupler. Bas. So this is all from my side for this chapter. 2 marks category, what is optoelectronic, definitions, absorption and emission, and yes, LED. In the 4 marks, photovoltaic cell or optocoupler. In the 5 marks, PN, PIN, and avalanche diode or photoconductive cell. Done. Okay, so the unit is done. Next, the last unit. So this is our last unit, that name is nanomaterials, और इसका पेन का कलर हम ले लेते हैं केसरी. यस, नैनो मटेरियल्स. फॉर अ 2 मार्क्स कैटेगरी, व्हाट इज नैनो, यूजेस ऑफ नैनो मटेरियल, definition of nanomaterial. Clear? So these are the things. This is the definition. Next, these are the 3 types: particle, agglomerate, and aggregate. Next, this is my first question. Why nanomaterial importance? That means uses, applications. Now, second question in 2 marks category, or sometimes in 4 marks category, but you can ignore in 4 marks. What is 0D, 1D, 2D, and 3D with example? Clear? एक में पूछा जाएगा 0D के लिए, दूसरे में पूछा जाएगा 1D के लिए, थर्ड में पूछा जाएगा 2D के लिए. 2 marks, 2 marks, 2 marks, total 6 marks. Clear? So you remember 0D, that means what, and some example. 1D, that means what, and some example. 2D, that means what, and some example. And 3D, that means what, and some example. So this is my second question in 2 marks category. Example is given here. Clear? No need to draw the diagram in your examinations. Clear? You can skip this. You can skip this. Skip. Types of nanomaterial. Again, 2 marks. Carbon based and metal and semiconductor based. You can refer this slide. Skip. Skip. Third 2 marks question, what is quantum confinement in nanomaterial? This is a very important question. So remember this. This is our third question. Next, skip, skip. And the last question is this: properties of low dimension material or properties of nanomaterial. Remember this. This is only one question we have, which is very important. Either 5 marks
properties of nanomaterial, properties of low dimension material, all the things are same. You have to write at least 5: physical, mechanical, thermal, electrical, optical, and magnetical. Either in the 6 marks category. The first they will ask write physical property, second write mechanical property, third write thermal property. 2 plus 2 plus 2, whole 6 marks question. So you have to write these three. Either they are specifically asked write the electrical property, write the magnetical property, and write the mechanical property. So you have to write these three. So from my side, this is the very important question from this chapter, or heart of this chapter. That is what? Properties of nanomaterial. And remember, these 6 at least, they will ask anyone, either 2 marks or 4 marks or 5 marks. And this is the very important questions from this chapter. So this is the physical property, second is mechanical property, third is thermal property, fourth is electrical property, fifth is optical property, sixth is magnetical property, and it is enough for this chapter. If you have a time, you can refer this novel material, otherwise you can skip this because it is done. Clear? Piezoelectric is, this is just for your knowledge. Okay, smart material, done. Novel material, you can skip this slide. So I think it is done. Our whole 5 chapters are done, and the important discussion is already done. So using this PDF, I explain 2 marks, 4 marks, and 5 marks segment. This 2 marks, that means your question paper 6 marks segment. Clear? Okay. So thank you very much to all beta for your time, and this video is available in this series इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम. यू कैन फॉलो माई चैनल फिजिक्स की दृष्टि, और आपको सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. द प्ले लिस्ट नेम इज वॉट? इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन कॉमेंट, आई विल आंसर इट. Just cover whatever discussed in this video and it is enough for your final examinations. Thank you very much to all. Thank you very much, and your 360-degree exam preparation is done. Thank you.